characteristics and all those features, all those elements and nuances of Elizabethan comedy, Shakespearean comedy, romantic comedy that has been followed here, that has been adhered here in this particular play. And if I am analyzing the play A Midsummer Night's Dream as a romantic comedy, so certainly in order to prove my point, I must be quoting from the text. अनदर थिंग जो कि लिटरेचर के इवेलुएटर्स बहुत अहमियत देते हैं और ऐसे एग्जामिनीज को, ऐसे स्टूडेंट्स को वेटेज मिलता है, वो ये है कि क्या आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता सकते हो, बात कर सकते हो, जब आप अ मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में बात कर रहे हो और मिडसमर नाइट ड्रीम को एक रोमांटिक कॉमेडी के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हो, are you in a position to refer to any other romantic comedy by Shakespeare? That has to be done. That has to be done, right? So that is why I was trying to suggest you that when you are making a study of A Midsummer Night's Dream as a typical representative of, sorry, as a typical representative of Shakespearean comedy, so my dear friends, it is very important to refer to at least one or two more romantic comedies by Shakespeare. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. बहरहाल अब मैं फिर वापस आऊं और मैं फिर यहीं से दोबारा शुरू करूं रिगार्डिंग अ मिडसमर नाइट ड्रीम, that it is a romantic comedy, but it is a romantic comedy with a difference. Mind this phrase which I am using. अभी मैं इसको explain नहीं करूंगा. I will try to explain this particular phrase with a difference, right? So this particular phrase, I will be explaining it थोड़ा सा देर में, a bit later. But yes, there is there are elements of romantic comedy here in A Midsummer Night Dream, as there were romantic elements in As You Like It or Twelfth Night. As You Like It और Twelfth Night में और अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और यहाँ पे मैं अब एक और कॉमेडी शामिल करूंगा, एंड दैट इज आल्सो आई लुक एट इट एज अ रोमांटिक कॉमेडी. आई होप सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट वेरी फेमस शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी वंस अगेन, एंड दैट इज द टेम्पेस्ट. सो अब देखिए, चार हो गए. एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट में और टेम्पेस्ट और मिडसमर नाइट ड्रीम में मैं एक लाइन में अगर डिफरेंस बताऊं तो वो ये है कि इसमें अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में और टेम्पेस्ट में एक एडिशनल एलिमेंट है which is not there in As You Like It or Twelfth Night, and that additional element is the मौजूदगी of supernatural. Look here, this is a very important element in Shakespeare, the use of the supernatural, right? और यहाँ पे मैं आपसे ये भी बात कर लूं कि not only in his comedies, I have written it in the chat box, not only in his comedies, in his tragedies also Shakespeare uses the supernatural in a very great extent. For example, those who have read Macbeth, they know that there were witches in Macbeth. They know that there was a boiling cauldron in Macbeth, right? So Shakespeare is continuously in the habit of using the suprahuman and supernatural kind of things in his plays. So इन टेम्पेस्ट ऑल्सो, अगर आपको प्रॉस्पेरो और मिरेंडा याद हो, बहुत खूबसूरत ड्रामा था, बचपन में स्कूलों में पढ़ाया जाता है. और अगर आपको अ मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो तो मैं बस सिर्फ ये अर्ज करूं कि these two have some additional thing which is not there in As You Like It or the Twelfth Night, and that is the मौजूदगी of the presence of the supernatural. So my next suggestion is that you should also prepare a question, you should also prepare an analysis, you should also make a study of this play with reference to the use of the supernatural mechanism in this particular play. किस तरीके से शेक्सपियर ने सुपरनेचुरल को इस प्ले में यूज किया है और उसका इस्तेमाल किया है, एंड हाउ सुपरनेचुरल प्लेज अ वेरी पिवटल रोल, a very important role in the movement of the plot structure of this particular play, and how that supernatural
takes up the story to its climax and takes it to its proper solution, right? मौजूदगी ऑफ फेरीज, परियों की मौजूदगी है इसमें। मैकबेथ में विचेज हैं, मैकबेथ में विचेज हैं। इवन दोज जो जो अगर कोई आईसीएससी वगैरह बोर्ड से आया है तो उसे पता होगा, बचपन में उसको आईसीएससी स्कूल्स में जूलियस सीजर आईसीएससी स्कूल्स का एक बहुत फेवरेट ड्रामा है। आईसीएसई स्कूल्स में बहुत जोर शोर से पढ़ाया जाता है जूलियस सीजर। एंड इवन शेक्सपियर यूज एंड जूलियस सीजर इज अ क्रॉनिकल प्ले, इट्स अ हिस्ट्री प्ले बाय शेक्सपियर। So even in that Julius Caesar, there is a lot of supernatural that has been used by Shakespeare. Anyways, as far as the use of supernatural in this particular play is concerned, it is magic and the मौजूदगी of, as I said, the presence of the fairies, right? हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किस तरीके से how Shakespeare has used this particular element in the play. अब मैं वापस जाऊं उस बात पे जो मैंने कहा कि याद रखिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, बट इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी विथ अ डिफरेंस। ये विथ अ डिफरेंस को मैं जरा सा एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में और सिर्फ 1 मिनट में इस पे बात करना चाहता हूं। एंड दैट विथ अ डिफरेंस को मैं इस रूप में डिफाइन करता हूं कि ये रोमांटिक कॉमेडी है क्योंकि इसमें लव है, फन है, लाफ्टर है, बहुत ही rollicking frolic kind of laughter is there, a lot of humor is there, lot of fun is there, lot of entertainment and laughter is there, accompanied by the theme of love. So it's a romantic comedy, but as I said, it is with a difference because there are grim and frightening elements also, right? I am writing it in the chat box कि ये इसको मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी विथ अ डिफरेंस है। उसकी वजह ये है कि ऑन वन हैंड it contains the theme of love. Yes, there are a lot of love angles and triangles that are presented here in this particular play, right? There is a lot of, as I said earlier, fun and frolic and frolicking kind of thing, and laughter and humor kind of thing. A lot of comedy is taking place. Everything is there. But in the meanwhile, the story also contains some grimness, some sadness, some frightening elements. Now, look here. This is an area in which Shakespeare is violating from the classical norms of comedy, the Aristotelian norms of comedy. Shakespeare is mixing the sad. Shakespeare is mixing the grim. Shakespeare is mixing the frightening in the play. So that is a thing. That is why ये एक typically Shakespearean comedy है, क्योंकि ये classical comedy और Aristotelian concept of comedy से it is very different. Now I move ahead and I would like to tell you a very small little information that this particular play was written by Shakespeare in 1595, 1596, right? 1595, 1596 के अराउंड ये ड्रामा जो है वो लिखा गया, ठीक है। एंड इट वॉज पब्लिश्ड का भी मैं जरा सा एज आपके सामने रख दूं, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1600। पहला पब्लिकेशन, द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द प्ले वॉज डन इन 1600। इट वॉज डन इन अ क्वार्टो एडिशन। द फर्स्ट publication was done in a quarto edition. Quarto कहते हैं एक शीट ऑफ पेपर को, जो अखबारी कागज होता है, अगर आप लोगों को अनुभव हो, सरकार की तरफ से अखबार वालों को जो कागज छापने के लिए जाता है, दिया जाता है, वो बहुत बड़ी शीट होती है, राइट। सो जब उस शीट को डबल फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो फोलियो कहलाता है, और जब उसको 4 तह में फोल्ड करते हैं तो वो क्वार्टो कहलाता है। सो टिपिकल पब्लिशिंग का टर्म है ये, जिसका कोई लिटरेचर से बहुत खास लेना देना नहीं है, ये पब्लिकेशन का टर्म है। बट द फर्स्ट एडिशन इन 1600 वाज डन इन द क्वार्टो फॉर्मेट, और शेक्सपियर के मरने के बाद in the year 1623 its folio format was published.
मैंने ये बताना इसलिए जरूरी समझा है क्योंकि ये कहा जाता है और शेक्सपियरियन स्टडीज में, शेक्सपियरियन रिसर्चेस में इट हैज बीन एक्सेप्टेड, इट हैज बीन सेड that the quarto editions were basically bad editions of Shakespeare. They were unreliable editions of Shakespeare, whereas the folio editions were done with much research, so they are more good editions comparatively, and they are reliable editions of Shakespeare. बट बहरहाल मैं फिर कह रहा हूं कि ये एरिया लिटरेचर से ज्यादा पब्लिकेशन की फील्ड का एरिया है, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो शेक्सपियर के बारे में इन डेप्थ रिसर्च वाली चीजें करना चाहते हैं. एनीवेज, मैं फिर अब जरा सा और आगे बढ़ूं, एंड I would like to introduce a terminology here, a particular term here, कि इट इज अ मल्टी लेयर्ड प्ले. मैंने मल्टी लेयर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, एल ई नहीं होगा, राइट, एल ए होगा. सो इट्स अ मल्टी लेयर्ड प्ले, राइट. अब ये मल्टी लेयर्ड का, बिफोर आई गो हेड आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट वंस अगेन, जो मैं भूल गया. मैं अपनी हर क्लास में, इग्नू की हर क्लास में मैं ये अनाउंसमेंट जरूर करता हूँ. वन, डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. You will get a chance to ask your question towards the end of the class. Two, you will be typing your question in the chat box instead of asking it through the sound, right? Because I'm more comfortable in that way. The third thing is that do not share your phone numbers and mobile numbers in the chat box in the name of joining any WhatsApp group, or if somebody asks like that. We at IGNU are not responsible for any kind of misuse of your phone number. Okay, so let us move ahead once again. I was saying that, dosto, it is a Midsummer Night's Dream is a multi-layered text. I'll be using this term. It's a better word, text. मैंने गलती से R ज़्यादा लगा दिया, text. So it's a multi-layered text. एक रोमांटिक कॉमेडी के तौर पे भी आप इसको अगर एनालाइज करेंगे और आप कहेंगे कि थीम ऑफ लव जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है. इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थीम ऑफ द प्ले. So even when you look at this concept of love or the theme of love, you have to look at the different types. मतलब अगर आप एज यू लाइक इट में पढ़ा रहा होता, आप सॉरी पढ़ा नहीं, एज यू लाइक इट पे अगर मैं आपसे बात कर रहा होता तो मैं शायद आपसे ये बात करता, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एज यू लाइक इट, जिसमें उसने वेरियस types of love: filial love, brotherly love, romantic love, spiritual love. So various types of love has been discussed in As You Like It, taken up in As You Like It. उतने लेवल पे उतनी लेयर्स तो लव की यहाँ पे नहीं है in this particular play, but again still this particular play also contains a few layers of love, a few layers of love. So even when you look at the treatment of the theme, right? That is the theme of love, let us say, right? So even this particular theme called love has been depicted, it has been portrayed at a very multi-layered level. So you have to look at it also. But when I said that the text is multi-layered, the play is multi-layered, I am not saying this only with reference to love, only with reference to this theme of love. Of course, as far as the theme of love is concerned, the play has a multi-layered theme, and it is the play is a multi-layered play. But मैं जब कह रहा हूं कि it is a multi-layered play, तो there are a few other aspects also. I will be raising those aspects in due course of my discussion. You should keep this in mind कि दिस पर्टिकुलर मैन जो कि आपके सामने अभी बात कर रहा है, उसने ये कहा है कि ये ड्रामा एक मल्टी लेयर्ड ड्रामा है. तो इन ड्यू कोर्स ऑफ डिस्कशन व्हेन वी विल गो अहेड, we will be raising a few elements apart from being a romantic comedy, apart from being the most important theme, having the theme of love is being the most important theme, sorry.
I'll be raising a few more issues. I'll be raising a few more aspects of A Midsummer Night Dream as a play, and that is why I am saying it I am looking at it as a multi-layered play. Uh, if we talk about the characters, and if we talk about the setting, acha, it is very interesting. It is again very interesting. The setting of the play is in Athens, Athens. ये बहुत डेलिब्रेट है. शेक्सपियर अपनी पूरी जिंदगी ग्रीस नहीं गया. Shakespeare never went to Greece. He never saw Athens. He never experienced, even in the 16th century when he was alive, he never experienced Athens or Greece. But why he was locating his play in Athens, that is again a very important and a very pertinent thing to note. The reason is Grecian comedies. क्योंकि Grecian comedies बहरहाल, look here, Grecian comedies जो है ना, वही यूरोपियन कॉमेडीज का, जैसे ग्रीशियन ड्रामा के बारे में कहा था, अब मैं स्पेसिफिकली प्रिसाइजली लिमिटिंग माई सेल्फ, आई एम सेइंग द सेम अबाउट ग्रीशियन कॉमेडीज, that they play a very important role. They are the roots of European comedies, including the comedies in English. Anyway, so Theseus is the character, right? जहां से हमारा जो प्ले है वो शुरू होता है. Theseus is the character. He is the Duke of Athens. Look here. He is the Duke of Athens. He is in love with a lady, and the lady is named in the play as Hippolyta, right? So she is an Amazonian queen. Look here. Look at the things. Well, I mean, look at the great imagination that Shakespeare. और आप सोचिए इस आदमी के बारे में कि जो आदमी जिसके आदमी के बारे में we say that he was not a very highly educated person, we say that he was not a very well read person, we say that he basically did not belong to a very literate and learned kind of a family kind of thing, right? But look at this man, and look at the way he imagined his world. And look at the way he presented a very broader worldview in his literature. Anyways, मैं भटक जाऊंगा, मैं फिर शेक्सपियर पे लग जाऊंगा, मुझे अपने आप को रखना है लिमिट टू दिस प्ले. तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि दिस थीसियस, द ड्यूक ऑफ एथेंस, has conquered the love of Hippolyta, the Amazon queen or the Amazonian queen. They are about to marry. अभी शादी नहीं हुई है. They are about to marry. शादी की प्लानिंग चल रही है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, शादी होने वाली है ड्यूक ऑफ एथेंस थिसियुस की हिपोलिटा के साथ. मीनवाइल टू लवर्स, है ना, टू लवर्स एंटर. और ये टू लवर्स कौन है? लेजेंडर एंड हर्मिया, है ना, द मेल एंड फीमेल, है ना. सो द टू लवर्स एंटर the forest that is portrayed in this particular play, the forest that is pictured in this particular play, the forest near Athens, so to say. So Lysander and Hermia, they take shelter, they take refuge in the forest near Athens. ये भाग के क्यों आए हैं? Why they have eloped? They have eloped because Hermia's father did not want Hermia should be having a relationship with Lysander. Hermia's father did not want that Hermia should marry Lysander. Rather, Hermia's father wants that she should marry the man of his choice, the father's choice, and that was Demetrius. So look here, I'm writing the character's name in the chat box. So Hermia's father wants Hermia to marry Demetrius. Hermia does not want. She is in love with Lysander. So they have eloped
and they have come to the forest near Athens, where the marriage preparations for Theseus and Hippolyta is going on. अब कहानी जब इससे आगे बढ़ती है तो ये होता है कि डेमेट्रियस was interested in Hermia. अब देखिए सर, लव ट्रायंगल. Lysander is also interested in Hermia. Hermia is interested in Lysander. Hermia is not at all interested in Demetrius. Kintu Demetrius is interested in Hermia. So it's a love triangle. There is another character, a female character, Helena, who was, or who is rather, who is in love with Demetrius. She is seeking the love of Demetrius. She is soliciting, she is vying for, vying, she is vying for the love of Demetrius. तो डेमेट्रियस की नजरों में अच्छा बनने के लिए वो डेमेट्रियस को लाइजेंडर और हर्मिया का प्लान बता देती है कि वो कहां भाग के गए हैं. She tells, I mean, Helena tells Demetrius about the whereabouts of Lysander and Hermia. And why she did so? She did so with the hope that she will get the favor of Demetrius. अब होता यह है कि डेमेट्रियस भी उन लोगों को फॉलो करता हुआ, परसू करता हुआ, चेस करता हुआ, डेमेट्रियस ऑल्सो गोज टू दैट फॉरेस्ट नियर एथेंस. किसको फॉलो करता हुआ? लिजेंडर एंड हर्मिया को. एंड परसुइंग डेमेट्रियस, चेजिंग डेमेट्रियस, हेलेना ऑल्सो गोज, सॉरी. अब देखिए क्या हो रहा है. तो अब ये चारों हैं वहां पे इन दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट नियर एथेंस. The forest is not a normal forest. It's a forest visited by the supernatural elements. It is a forest that is inhabited by fairies. It is a forest inhabited by fairies. And these fairies are also happy at the marriage of the Duke of Athens. The fairies are also making fun. They are also having enjoyment. They are also जो मैं अक्सर शेक्सपियरियन कॉमेडी के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये वर्ड यूज करता हूँ, आज 2-3 बार आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे. They are having all that kind of rollicking, frolicking comedy kind of thing and fun and frolics, right? So they are in a mode of enjoyment. They are in a mode of celebration. इस फेरीज के इस दल का किंग ऑफ फेरीज है ओबेरन, और फेरीज के इस दल का द क्वीन ऑफ फेरीज इज टाइटेनिया, राइट? सो these two, I mean the king of fairies, Oberon, and the queen of fairies, Titania, they are with their pack of fairies enjoying merrymaking, fun making, and all these kinds were happening in that forest, right? और उसी हंसी खुशी में अक्सर आपने देखा होगा, हंसी खुशी में मजाक करते करते अक्सर झगड़ा हो जाता है. So there happened a very मजेदार किस्म का एक क्वारल होता है टाइटेनिया और ओबेरॉन के बीच में. वो टाइटेनिया का कोई, उसकी जो सहेली है, उसका कोई बेटा है, उसको ओबेरॉन अपने साथ रखना चाहता है, टाइटेनिया अपने साथ रखनी चाहते हैं, आप रखना चाहते हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट बिकॉज फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो टाइटेनिया और ओबेरॉन जो कि किंग और क्वीन ऑफ फेरीज हैं, उनका झगड़ा हो जाता है. एंड ओबेरॉन का एक बहुत फेवरेट फेरी सर्वेंट है, एक बहुत फेवरेट सर्वेंट है, या उसकी जो कोटरी है, उसका जो ग्रुप है ओबेरॉन का, उसके अटेंडेंट्स का जो ग्रुप है ओबेरॉन का, तो उसमें एक बहुत मुंह लगुआ अटेंडेंट है, अ वेरी फेवरेट अटेंडेंट ऑफ ओबेरॉन कॉल्ड पक. It's a very important character in Midsummer Night Dream, right? So ओबेरॉन पक को ये ऑर्डर देता है कि मुझे अपनी रानी को टाइटेनिया को थोड़ा सबक सिखाना है.
है ना। और ये सब कुछ बहुत लाइटर वेन में हो रहा है, ये सब कुछ बहुत ही लाइटर वेन में हो रहा है। ओबेरॉन वांट्स टू डू समथिंग, सम मिसचिफ, एंड फॉर दैट ही सिलेक्ट्स हिज सर्वेंट पक, एंड ही सेज के कुछ मिसचिफ करो भैया। और वो मिसचिफ ये तय होता है कि कोई मैजिक फ्लावर है, उस मैजिक फ्लावर का अगर मैजिक जूस किसी की आंख में, इफ इट इज पोर्ड इन द आईज ऑफ समबडी, तो after pouring the juice of that magic flower in the eyes of somebody, तो होगा ये, दिस विल हैपन के वो बंदा जिसकी आंख में द फ्लावर जूस विल बी पोर्ड, वो जिसको देखेगा पहली दफा, जिस पे उसकी नजर पड़ेगी, he or she will fall in love with that person. Pouring that flower juice, he or she will fall in love with that very first person जिसको वो देखेगा। तो ये एक शरारत थी जो ओबेरॉन कराना चाहता था पक से अपनी रानी टाइटेनिया के खिलाफ। चलिए साहब, ओबेरॉन के आदेश पे पक इस बात की और इस मौके की तलाश में निकलता है। एम आई ऑडिबल? ठीक ठाक हूं अंकिता सिन्हा? कैन यू टेल मी और एनीबडी हु Yes, कैन? sir. Yes, sir. You're audible, sir. Yes, थैंक sir. Yes, sir. थैंक यू Yes, थैंक sir. Yes, हो sir. गया, हो गया, सब लोग बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाए। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि वो इस मौके की तलाश में है। आई मीन पक इज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि जब टाइटेनिया सोई हुई हो, when he finds and when he is able to find Titania sleeping, तो he will try to pour that flower juice into the eyes of Titania। अब वो इसी इंटेंशन के साथ या इसी आइडिया के साथ वो बेचारा घूम रहा है, क्योंकि 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 ओबेरॉन ने आदेश दिया है, उसके राजा ने आदेश दिया है कि उसको ये काम करना है, जस्ट जस्ट टू मेक सम मिसचिफ, जस्ट टू पनिश टाइटेनिया वगैरह वगैरह, बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस जो उसने किया है कि उसने अपनी सहेली के बेटे को, जिसको कि पक अप सॉरी ओबेरॉन अपने साथ रखना चाहता था, उसको उसने उसके हवाले नहीं किया। एनीवेज, फॉरेस्ट में व्हाट हैपेंस इज दैट के पक की नजर पड़ती है इन कपल ऑफ लवर्स पे, डेमेट्रियस, हेलेना, हर्मिया, लेजेंडर, एंड पक डिड सम मिस्टेक्स। Puck did some mistakes, and out of that mistake, look here, out of that mistake, both the two male characters, both the two male characters, Demetrius and Lysander, they start loving Helena. Lysander हर्मिया को भूल जाता है, छोड़ देता है, of course under the effect of that flower juice, क्योंकि पक को ये शरारत सूझी, वो इन लोगों को की आंख में भी डाल दिया उसने। और जाहिर है पक ने ये डाला था इसलिए कि उसने उसको हेलेना को सुन लिया था हाथ पैर जोड़ते डेमेट्रियस का, और उसको लगा कि हेलेना की थोड़ी मदद की जाए, बड़ी बेचारी बेसहारा सी है, समथिंग लाइक दैट। सो बाय मिस्टेक उसने लाइजेंडर के और डेमेट्रियस को लाइजेंडर को डेमेट्रियस समझ करके उसने बाय मिस्टेक लाइजेंडर की आंख में पहले तो फ्लावर जूस पोर किया। अब जब लाइजेंडर की आंखों में उसने फ्लावर जूस पोर किया तो उधर से हेलेना गुजर रही थी। लाइजेंडर सॉ हेलेना एंड ही फॉल्स इन लव विथ हेलेना, फॉरगेटिंग एंड लीविंग हर्मिया। फिर पक को लगा कि गलती हो गई, फिर पक को लगा कि गलती हो गई, तो उसने वो फ्लावर जूस को डेमेट्रियस की आंख में टपका दिया। ही पोर्ड द फ्लावर जूस इनटू द आईज ऑफ डेमेट्रियस। अब डेमेट्रियस के सामने से फिर हेलेना ही गुजर रही थी, तो ही ऑल्सो फेल इन लव विथ हेलेना। So both of them, I mean the two male characters, the two male heroes are now in love of Helena। अब हेलेना की बेचारी की बड़ी बुरी हालत है, उसको ये लग रहा है कि ये लोग सही मानों में मोहब्बत उब्बत हमसे नहीं कर रहा है, बल्कि दे आर मेकिंग फन ऑफ हर, है ना। सो शी हैज ऑलमोस्ट कट इनटू अ सॉरी फिगर। उसको लगा कि दे आर रिडिक्यूलिंग हर, और हर्मिया बेचारी अकेली रह गई हैं।
तो ओबेरॉन को ये पता चलता है, दिस मिस्टेक बाय पक. Oberon had an antidote which Puck did not know. So Oberon had an antidote. He gave that antidote wala flower to Puck, and he said, "Go and treat the uh, treat the lovers once again and make them better." Now इस बार जो फ्लावर जूस पाया जाता है उसमें अकलमंदी पक करता है. उसमें अकलमंदी ये करता है कि डेमेट्रियस और लाइजेंडर दोनों की आंख में एंटीडोट नहीं डालता, सिर्फ लाइजेंडर की आंख में एंटीडोट डालता है. ही पुट्स द एंटीडोट इन द आईज ऑफ ही पुट द एंटीडोट इन द आईज ऑफ लाइजेंडर. और अब उसके सामने से हर्मिया गुजरती हैं, तो वो हेलेना को भूल जाता है, एंड ही वंस अगेन कम्स बैक टू हर्मिया. ही इज वंस अगेन हर्मियाज लवर, एंड द टू रेसिप्रोकेटेड, the two reunited. I mean, Lysander and Hermia. Demetrius has already fallen in love with Helena, so that remained the same. उसके बाद फिर जो थेसियस है, जो ड्यूक है एथेंस का, उसको इन सब चीजों की खबर मिलती है. He called the two lovers, the pair of lovers, to his court, and the three marriages takes place together. I mean, the marriage of Theseus with Hippolyta, the marriage of Lysander with Hermia, and the marriage of Demetrius with Helena. बहरहाल ये एक छोटा सा आइडिया था जो मैंने आपसे शेयर किया. अब आप इसमें ये अंदाजा लगाएं कि इन तमाम घटनाक्रम के बीच में चीजें कैसे हेवायर हुई होंगी, चीजें कैसे थिंग्स वेयर हाउ द थिंग्स वेयर एट सिक्सेस एंड सेवन, यू नो, and how all the entertainment and enjoyment kind of element was done by Shakespeare, how all that fun and frolic was done by Shakespeare. तो ये सब कुछ बड़ा मजेदार है. अच्छा, इस बीच में वो जो जो ओबेरॉन की जो महारानी थी टाइटेनिया, उनको जो उनके मिसचिफ के लिए जो ओबेरॉन को सजा देनी थी, उसमें भी एक मजेदार इंसिडेंट होता है. वो उनके वो टाइटेनिया के आंख में वो पोर करता है मैजिक जूस, ठीक है, और फिर कोई देहाती उधर से गुजर रहा था, ठीक है, और वो देहाती जो है वो सो जाता है. देहाती मतलब विलेजर, एंड दैट विलेजर स्लीप्स, थक करके वो सो जाता है. तो उस विलेजर के सर पर से गायब करके, उसका सर गायब करके उसमें एक गधे का, घोड़े का, काहे का सर लगा देता है. आप देखिएगा टेक्स्ट, मुझे बहुत है ना. और फिर उसके बाद टाइटेनिया उठती हैं, वो घोड़े के सर वाले, गधे के सर वाले देहाती को देखती हैं, एंड शी फॉल्स इन लव विथ दैट मैन, राइट, एंड उसको अपनी बाहों में लेकर के फिर सो जाती हैं. अब और ये देख करके ओबेरन और ये सारे जो फेरीज हैं सब बहुत मजाक उड़ाते हैं टाइटेनिया का. सो दैट वाज अ वेरी शरारती काइंड ऑफ एन आइडिया दैट वाज डन. और फिर टाइटेनिया का भी को भी एंटीडोट डाल करके ठीक भी किया जाता है. तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट. अब मैं जरा सा कुछ सीरियस बातों की तरफ आता हूं. आई मीन, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हाउ यू शुड अटेम्प्ट अ काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ दिस प्ले. I have already given you the information that when this particular play was written, right? It was in 94, 95, 1594, 1595. I have already given you the information that when this particular play was published, the Bad Quarto was published in 1600 and the Folio was published in 1623 when Shakespeare was already dead. But मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया था कि this particular play was staged in 1596. For the first time, of course, right? So this is again a very small little information for you. Another thing which I would like to request or suggest you is that you should look at the play as a kind of a comic fantasy. Look here. The story that I have told to you, you can guess from the outline of the story itself that what kind of fantasy would have been there in the play. So it is one very important part of analysis of this play that it has to be looked, it has to be seen as a comic fantasy. Now, as far as if I try to tell you the themes of this play, and if I try to tell you, of course, when you will be analyzing the play with an angle of the content, the matter, and the issues that are raised in this play, the themes that are raised in this play. So certainly I would like to write it in all capital letters that love is the most prominent theme of the play.
But I repeat it once again that it is the presentation of, it is the recording of love with a several dimension, and a multi-layered dimension has been presented in the story, in the play. The another important thing, or the another important theme of the play is marriage. Look here. Another very important theme of the play is marriage. So then if you agree with me, and hopefully you will agree with me, jealousy is a very important theme that is there. ड्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्ले का, ड्रीम। ठीक है, और ये मैं आपसे अर्ज करूं कि लिटरेचर में, इन लिटरेचर दिस हैज ऑलवेज बीन अ वेरी कैप्टिवेटिंग थीम। dream and memories. Dream and memories has always been a very captivating theme in literature and literatures across the world, across languages. And in Shakespeare, this plays a very important role. I hope some of you, at least a few of you who know about Macbeth, also know about the dreams and the relevance of dreams in that particular play. I mean, can you believe that Shakespeare के ज़माने में there was nothing like psychology? This particular subject, this particular field of study was not there. You know, I hope you know that before क्या नाम था उसका, before Sigmund Freud, and Sigmund Freud is a 19th 20th century, late 19th century phenomena. So before Sigmund Freud, and there was nothing like psychology, and it was only after Sigmund Freud and another very important researcher in this field of behavioral sciences, Carl Jung, जिसको हम लोग जंग लिखते हैं, JUNG, है ना? So I hope that some of you may know this, that after these two people, I mean Freud and Jung, psychology became a field of study, psychology became a field of research, etc., etc. But can you believe, my dear friend, that in the 16th century there was a man in English literature named Shakespeare who has dealt with a phenomenal, in a very phenomenal way, he has dealt with several aspects of human psychology, several aspects of behavioral sciences, right? Anyway, मैं उधर नहीं भटकूंगा, अदरवाइज और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत सारा लंबा चौड़ा है। हैमलेट में भी बहुत है, हैमलेट को अभी हम लोग टेकअप करने वाले हैं, दैट विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशन। सो इन हैमलेट ऑल्सो, और हैमलेट के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बात करूंगा, तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा और टेकअप करेंगे। बट एनीवेज, सो साइकोलॉजी में ड्रीम पढ़ते हैं हम लोग, साइकोलॉजी में ड्रीम पढ़ाया जाता है, जो लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको आइडिया होगा। And I repeat it once again that memory, dream, these aspects of psychology play a very important role in, and a very phenomenal role in literature. Anyways, अब मैं थोड़ा आगे जाऊं तो मैं और कुछ themes पे आपसे बात कर रहा था। Hans da Kora, please do not do these things. This is very bad. At this juncture, you are the most matured people in higher education. The PG students are the most matured people. Do not malign your image. Do not damage your image in front of the teachers. So मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं थीम की बात कर रहा, तो मैं वहां से ना भटकूं। Sir, you're on mute. Sir, yeah. Okay. Is it fine now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So I was telling my dear friends that jealousy is, I'm coming back to the themes basically. So jealousy is a very important theme of this play. Dream is a very important theme of this play. यहाँ से अब मैं psychology से निकल करके, I would like to add one more theme, and it is a very important theme: mischief. Mischief. The mischief play, all those mischiefs basically that were played by Oberon and Puck especially, right? सो मिसचिफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। ठीक है, लेकिन मैं अब कुछ बहुत ही अटपटी थीम्स भी आपके सामने रख रहा हूं, एंड दैट इज व्हाई आई सेड, नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई, दैट इज व्हाई आई सेड के द प्ले इज अ वेरी मल्टी लेयर्ड प्ले। इट इज नॉट सिंपली
जेलेसी, ड्रीम, मैजिक, लव, मिसचिफ, ये सब मोहब्बत और उसके आसपास की चीजें हैं, है ना, ये सब मोहब्बत और उसके इर्द गिर्द की चीजें हैं। लेकिन मैं कुछ और थीम्स भी रख रहा हूं आपके सामने जो इस प्ले को दैट मेक दिस प्ले अ मल्टी लेयर्ड प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू से दैट ट्रांसफॉर्मेशन, let me write it in the chat box again. Transformation, yeah, I hope you know this. Transformation is a very important theme in the play. So ये हो गया अनरीजन। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन नहीं, अनरीजन, राइट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका भी माइक ऑन है काइंडली माइक ऑफ कर लीजिए, आस्था कुसुम प्लीज फॉर गॉड। सो अनरीजन, द नेक्स्ट इज रिवर्सल, रिवर्सल, द चेंज दैट हैपेंस, द रिवर्सल दैट हैपेंस हियर इन दिस प्ले, राइट। लेकिन अब जो मैं दो थीमें, बल्कि तीन थीमें अब जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दे आर मोर अ प्रूफ that the play is not simply a play of love, not simply a romantic play, rather a multi-layered play. I am introducing a theme called fantasy versus reality. This is a very important theme in the play, right? Fantasy versus reality, right? And another, और ये जो मैं थीम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन शेक्सपियर। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के लेखकों की ये बड़ी ही प्रिय थीम्स में से रही है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो दिखता है और जो होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन शेक्सपियर, in As You Like It, in several other plays by Shakespeare. It's a very important theme of other writers, of other literatures of English literature also. And the last theme that I am introducing is again a very rochak theme, और ये जो पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्पररी जो इंटरप्रिटेशन है, द 21st सेंचुरी इंटरप्रिटेशन ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सो वो 21st सेंचुरी इंटरप्रिटेशन ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हम लोग इसको एक गजब के पॉलिटिकल प्ले के तौर पे देखते हैं। आपको हैरत होगी सुन करके, ऑर्डर वर्सेस केओस। व्हेन वी लुक एट इट and when we try to interpret it in a very contemporary way, and when we try to interpret the play in a very modernistic manner, suddenly it becomes a highly politicized play. Suddenly it becomes a political comedy. And here, when we look at it as a political comedy or as a political play, so to say, order versus chaos is a very important, a very pertinent theme of this play, right? With this, I would also like to suggest you to do some work on the style of Shakespeare. I hope you know that when you evaluate any text of literature, you should keep in mind its content wala part, and the theme, the issues, the areas, the major elements, the major problems that have been raised in the play, conflict, etc., etc. But there is also something important called the style of any writer in any particular text. So, Shakespearean style of comedy and the kind of a style that is used here. Now, with regard to a style, I would like to suggest three or four things that you should consider. One is the use of language. One is, and it is very important to note it down, right? It is very important to, मैंने language थोड़ा सा, oh अच्छा बीच में space पड़ गया। So this use of language, इसको आपको notice करना है। शेक्सपियर की जो typical comedy की जो language शेक्सपियर ने use की है। Another very important thing with reference to style that is depicted in this play is prose versus verse. शेक्सपियर यूजेस वर्ड्स, यस ठीक है, बट शेक्सपियर के बारे में मैं आपसे अर्ज करूं कि शेक्सपियर पे ये इल्जाम धरा गया और उसके कंटेम्पररीज ने उसको इसके लिए, उसके कंटेम्पररीज मतलब द कंटेम्पररीज ऑफ शेक्सपियर ड्यूरिंग हिज टाइम, राइट,
उसको इस वजह से अच्छी नजर से नहीं देखा कि शेक्सपियर ने वायलेशन किया नॉर्म्स का, और उसने प्रोस का इस्तेमाल किया ड्रामे में, उसने ट्रेजेडी में गजब के प्रोस का इस्तेमाल किया, उसने कॉमेडी में प्रोजेइक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So the way Shakespeare intermixes these two mediums of verse and prose in this particular play also, as he does in other plays also, right? So that is also an area to look at, right? Another thing is, जो मैंने आपसे कहा था कि ये एक मुख्तलिफ किस्म का ड्रामा है, although it is a comedy, but I said that it is grim. Although it is a comedy, but I said it is frightening. So with regard to that, जब आप इसके स्टाइल को एनालाइज करेंगे, तो you should also keep in mind the melodramatic elements that have been used by Shakespeare. The melodramatic elements that have been used by Shakespeare. But with regard to a style, the most important thing that I would like to suggest to you that you should work upon is the use of one main plot, you know, and there is one main plot and it has several subplots. Several subplots. Now, my dear friends, it is because of this violation also of classical Aristotelian concept of comedy or tragedy, बल्कि ड्रामा, है ना, शेक्सपियर के यहाँ, सॉरी, एरिस्टोटल के यहाँ और क्लासिसिज्म में और क्लासिकल जो ट्रेडिशनल ड्रामा था, इन दैट ट्रेडिशनल ड्रामा, इन दैट क्लासिकल ड्रामा, mixing of several plots was not allowed. Aristotle had basically reprimanded the writers, the dramatists, not to do this. There should be one single uniform action. And that is why Aristotle said that there should be a unity of action in the plays. One single uniform action it has to be maintained in the play. Several actions cannot be introduced, because several actions will lead to several plots, and several plots are not required. Several plots are not a very ideal thing for a comedy, or for rather for a drama, basically, in the classical concept or in the Aristotelian concept, in the Aristotelian area. But here is a man जिसने, शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने क्लासिकल नॉर्म्स को और लिटरेचर के क्लासिकल नॉर्म्स को और लिटरेचर के एरिस्टोटोलियन नॉर्म्स को शेक्सपियर हैज वायलेटेड अ लॉट. Whether he did it deliberately, whether he did it knowingly, whether he unknowingly हो गया, because Shakespeare was not that kind of a fellow, as we know from the books of history, who was well read, so we cannot expect this के शेक्सपियर ने ये बहुत जानबूझ करके करा होगा, but बहरहाल शेक्सपियर ने ये किया है, that he has intermixed several plots together. So this is a very prominent area which I would like to suggest you to work at when you are analyzing this particular play, I mean A Midsummer Night's Dream. Its main plot, and that is one only main plot, एक ही होगा, and it will be interlinked with several other subplots, right? Another thing which I would like to draw your attention to is its setting, that I have already told you that the setting is very deliberately done in Athens, and most of the action takes place in a forest near Athens. So it is important. It is important that you should consider the significance of the setting. I'm writing it in the chat box. Significance of the setting. With regard to setting, you can find a good entry in Cudden and a good entry in M.H. Abrams also. Okay, setting क्या होती है literature में, right? Since Athens was the seat of Grecian civilization. Athens was the seat of Grecian literature, the hallmark city, the most representative city of Grecian civilization. So that is why, what is the reason that Shakespeare was deliberately and very manipulatively locating his play A Midsummer Night's Dream in Athens? This is very important. अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ड्रामा एक जबरदस्त मिश्रण है ना, ग्रीक माइथोलॉजी
It is there in the chat box. English folklore, right? English folklore and classical literature. This is what makes the drama different. Zabardast. This is the multi-layerism, or this is the multi-layerity in the play which I was basically referring to. That it is a great mixing of, it's a great amalgam of these three elements: Grecian mythology, English folklore, and classicism or the classical literature. With this, let us now start concluding our discussion for A Midsummer Night's Dream, right? And while concluding our discussion on Midsummer Night's Dream, I am introducing a concept which is very famous in Shakespeare. It is basically a technique. Play within a play. वो एस एक्स्ट्रा लग गया है, मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ. Play within a play, not plays, right? It's a device which Shakespeare uses. ड्रामे में भी ड्रामा घटित होता है, रचित होता है. This is what the concept is. A theater inside the theater. So in the Act 5 of, wait a minute please, in the Act 5 of, देखिए अभी भी मतलब 8 बज गए, 8 बज के 3 मिनट हो गया. वी बिगैन एट 7 o'clock एंड स्टिल देयर आर पीपल हु आर रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन. बताइए, this is the difference between a regular class and an IGNOU class. Anyways, so I was trying to say that when you look at the Act 5 of the play, Shakespeare was using this concept of, or this technique, this device. It's a dramatic device basically, right? Agar aap M.H. Abrams, if you try to look at M.H. Abrams, if you try to look at Cadden, or even if you try to refer to Encyclopedia Britannica ka jo online version hai, you will find out that what this device is. It's a dramatic device, right? So Shakespeare has used this concept of play within a play in the most part of Act 5. अब मैं ये क्यों आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग जस्ट टू पुट दिस आइडिया इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू शुड मेक योर एनालिसिस, यू शुड मेक योर स्टडी ऑफ द प्ले विद दिस एंगल आल्सो, राइट? अब मैं कुछ और एंगल्स अगर आपको इंट्रोड्यूस करता हुआ जल्दी से, मैंने कहा कि लेट अस नाउ कंक्लूड आवर डिस्कशन. सो ह्यूमर, है ना? ऑफ कोर्स आप कहिएगा सर ऑब्वियस है, आप कौन सी नई बात कह रहे हैं. यस, आई एम नॉट सेइंग नथिंग न्यू. इट्स अ हिलेरियस कॉमेडी. It is a hilarious comedy. So the use of humor here in this particular play, वो बहुत गजब का है. और up to the extent I hope I have introduced this concept, there are farcical elements. I have introduced farce in my very first class, right? So there are farcical elements in the play. I also said that there is the use of romance. तो रोमांस जो 15-16 सेंचुरी में एक खास किस्म का राइटिंग होता था. आप पढ़िएगा, देखिएगा, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू विल फाइंड आउट दैट रोमांसेस वेर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जॉनरा इन इंग्लिश लिटरेचर. Prose romances and verse romances were written a lot in English literature, and writers like Sir Philip Sidney and Sir Thomas More, and even Lilly and Green and Peel, and even up to the extent of when we come to the 19th century, when we refer to the romantic times, when we refer to the romantic period, we have a great novelist in the form of Sir Walter Scott, who was creating romances in his writings in the 19th century. After that, English literature में romance लिखने की जो प्रथा थी वो बहुत कम हो गई. We have no more we have no writers now writing romances, but it's a vidha, it is a craft, and if you think कि अगर आपको लिखना आता है तो you can also create a romance in English literature or in any language to which you belong basically. So it's a genre, it's a vidha, it's a craft of literature. Meanwhile, it is also associated with that word romance, love, romanticism, you know. So that is there. Another very important thing, जो कि मैं already पहले कह चुका हूँ कि it's a very grim kind of a comedy. So there are element of grimness and there is frightening part elements also. So मैं कहना ये चाहता हूँ, I want to tell you
कि you should also look at the serious aspect of this play. Hmm? The serious aspect of this play. अच्छा, अब शेक्सपियर इज नॉट मच नोन फॉर सिंबॉलिज्म, लेकिन इस ड्रामे में गजब का सिंबॉलिज्म है. So this is one another very important aspect that you should look at, right? What? The symbols that are used in this play. And what is represented by those symbols. For example, अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं, और मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कहीं से पढ़ करके ही कह रहा हूं कि the two characters of Theseus and Hippolyta, they are basically more symbol than human, and they basically symbolize, I'm writing it down, they basically symbolize order, they basically symbolize stability, they basically symbolize uh, wakefulness, wakeful, right? I hope you understand these words. And it is because of this reason I was trying to tell you that this play can also be seen as a kind of a political drama. Of course, I don't know. I was not with Shakespeare, so I don't know whether Shakespeare was writing it with the angle of political drama. Because ये होता है, कभी कभी गालिब को भी ये पता नहीं चलता कि उसके जो शेर हैं, उसके जो कपलेट्स हैं, they are defined and they are explained in such a way, in such a manner, in such a multifaceted way that even Ghalib never thought of giving that meaning to his couplets, right? So it happens, it happens. So that is why I said that whether Shakespeare wrote it deliberately as a political comedy or not, but this is what we read in the play. A contemporary, modern, postmodern reading of the play, a 21st century reading of the play can tell you that uh, the character of Theseus and Hippolyta are more symbols than human characters, and they represent order, stability, wakefulness, etc., etc. Right. For example, Oberon is again, look here, look here. अब मैं एक बहुत गजब की बात आपसे कह रहा हूँ. Of course, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ. ये मैं बात आपको पहुंचा रहा हूँ. Oberon and the character of Oberon is also a very symbolic character. है ना? The love potion. I hope you know the meaning of this term. The love potion in this play that is represented by Oberon basically represents the power of love, right? The power of love. लेकिन साथ ही साथ आप मेरी बात शायद मानेंगे, it also shows that love is a very unstable thing. So instability is again a very important aspect of this play. Do remember, please, for God's sake, instability. है ना, the instability of love. चलिए मैं उसको और क्लियर करके ऐड करता हूँ. The instability of love. So this instability of love, power of love, that has been represented by the character of Oberon. मैंने आपसे कहानी सुनाने में बात नहीं की है, लेकिन जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो एक भाई साहब पूरी कहानी में बड़े गजब का एक तरीके से मालूम मौजूद है, और वो हम लोगों के मामा हैं. This person, of course, is not a person, right? The moon is there in the whole play, and my dear friends, this moon has been used by Shakespeare in this play in a very symbolic manner. एक गजब का सिंबल यूज किया है मून के जरिया उसने, राइट? अ वेरी मेजर सिंबल. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है विथ रिगार्ड टू सिंबल. अब मैं कुछ और बातें अर्ज करता हुआ आगे बढ़ूं और कंक्लूड करूं. एनिमल इमेजरी, शेक्सपियर यूजेस इमेजरी, एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर प्ले एनिमल इमेजरी इज यूज्ड. ठीक है. अगर मैं आपको इस प्ले के मॉडर्न और कंटेम्पररी इंटरप्रिटेशंस की बात करूं, है ना, जो हो सकता है शेक्सपियर ने ऐसा बिल्कुल ना किया हो, बट व्हेन वी एज मॉडर्न रीडर, व्हेन वी मेक अ रीडिंग ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम, वी कैन फाइंड दिस जेंडर इश्यूज बीइंग हैंडल्ड इन द प्ले. आप देखें साहब, आप देखें, गौर करें. एक आदमी 16th सेंचुरी में, gender issues is a very new thing, it's a very in kind of a thing in the 20th and 20th century. But Shakespeare, when you try to study
A Midsummer Night's Dream with this angle, right? A contemporary reading of A Midsummer Night's Dream, gender issues have been highlighted in the play, right? And I would also like to add, and to finish this here, the darker aspects of the play. Hmm? The darker aspects of the play. And what I said in this regard, the play presents a very savage idea, right? It is also erotic, है ना? It is also violent, right? It appears to be a very शरारती play. मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक वर्ड यूज कर रहा हूं अंग्रेजी में. It appears to be a very sinister play, right? So with this, I stop my discussion of A Midsummer Night's Dream. Let me check time. Yes, we have some. So let us begin Hamlet, the third block, right? The third block. We'll be having something. अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हम लोग रखेंगे उसको. आप मन में रखिए उसको या आप लिख करके रखिए. We'll take up. Of course, we do not have that much time ke we will finish Hamlet today itself. But allow me to introduce at least. Allow me to say a few things about Hamlet. Friends, among the 35 or 36 plays that are associated with Shakespeare, some critics say that he wrote 35 plays, some critics say that he wrote 36 plays. Whereas we are students, we are not scholars, we are not critics, we are not authorities of Shakespeare, we are not, है ना? So हमें इस पंगे में नहीं पड़ना है. ठीक है, 35 लिखे तो मान लेते हैं, 35 लिखे, 36 लिखे, ठीक है, आप सही, 36 लिखे. But out of these 36 plays, Shakespeare wrote, as far as the typology is concerned, Shakespeare wrote a variety of plays. अगर आप ब्रॉडर कैटेगरीज में बांटोगे तो तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में बांटना होगा. वन इज कॉमेडी, द अदर इज ट्रेजेडी एंड द अदर इज हिस्ट्री प्लेज, द अदर इज क्रॉनिकल प्लेज. लेकिन अगर आप और ज्यादा इसकी स्लाइसिंग करोगी, इसकी टाइपोलॉजी की, तो आपको इसमें रिवेंज ट्रेजेडी भी मिलेगा, आपको इसमें रोमांटिक कॉमेडी भी मिलेगा, आपको इसमें क्या नाम है, प्रॉब्लम प्ले इज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड with reference to Shakespearean play. Of course, Shakespeare never introduced this concept. The critics introduced this concept with reference to Shakespearean plays, problem play, जैसे measure for measure और भी कुछ ड्रामे हैं शेक्सपियर के. मैं भूल रहा हूँ, forgetting the even critics are of the opinion that Merchant of Venice should not be put into the category of a comedy, a pure comedy. Rather, it's a problem play. Anyways, we are not critics. So out of all these plays, Shakespeare wrote around 12 tragedies, pure tragedies. And among those pure tragedies, there were a few based on history also. For example, Julius Caesar, for example, Coriolanus. There was a romantic tragedy also, as Shakespeare wrote romantic comedies, he wrote a romantic tragedy also. I hope you know that. Romeo and Cleopatra. Romeo and Juliet, sorry. Antony and Cleopatra and Romeo and Juliet, the two great romantic tragedies, right? Uh, History-based plays, and when we say history, he was taking the history of Rome, he was taking the history of Greece, he was taking the history of Denmark, right? He was taking the history of several other places. Uh, when you look at those tragedies by Shakespeare and make a precise list of tragedies only, among that tragedy only kind of list that you will prepare, you will find out that the critics give a very high mark, or the critics put four plays of Shakespeare on a very higher pedestal, on a very higher level. And they are regarded as the four greatest tragedies of Shakespeare.
Critics go to the extent of saying that they are the four greatest tragedies of English drama. And even there are a handful of critics who go to the extent of saying that these are basically two greatest specimen of tragedies in world drama. इस बहस में हम ना भी पढ़े तो रिगार्डिंग हैमलेट, अब देखिए मैं कहां आ रहा हूं, तो रिगार्डिंग हैमलेट ऑल द क्रिटिक्स यूनैनिमसली एग्री कि ये शेक्सपियर का सबसे बड़ा ट्रेजिक प्ले। You are fortunate enough that you have got the opportunity of studying Hamlet with the, because मेरी जाती राय ये है कि कोई इंग्लिश ऑनर्स और कोई इंग्लिश पीजी कर ले और वो अगर मैकबेथ और हैमलेट और किंग लियर ना पढ़े, ओथेलो भी, ठीक है, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि उसकी डिग्री कंप्लीट है। अ डिग्री ऑफ इंग्लिश ऑनर्स एंड अ डिग्री ऑफ इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन इज इनकम्प्लीट। एनीवेज मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, तो मैं मैकबेथ, सॉरी, आई वुड लाइक टू कम टू हैमलेट एंड आई वुड लाइक टू से कि ये जाहिर है कि अमंग दोज फोर ट्रेजेडीज दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल and this is the most widely researched play by Shakespeare. This is the most widely written play by Shakespeare. एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में दुनिया के रिसर्चेस, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर रिसर्चेस, राइट, सबसे ज्यादा लिखा गया है। जब हम लोग पढ़ रहे थे in the 90s, and when this play was there in our post graduation course, so our teacher Professor K.S. Misra told us that there are around 60,000 research articles, not research theses, not PhDs, 60,000 research articles, मैं 90s की बात कर रहा हूं, were written on Hamlet alone, right? So that way it is a huge play. Anyways, मुझे ज्यादा तारीफें नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने मतलब की बात पे आना चाहिए। और मतलब की बात में द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू यू इज दिस। व्हाट इज दिस? It was written during this period, and it was a period of gloom. When you read the life of Shakespeare, and when you go into collecting some personal details of Shakespeare, you will find out that this was a period of gloom in the life of Shakespeare. And most of the tragic plays belong to this third phase of his life, who are, that is called as a period of gloom, right? Whatever it is. If you refer to J. Long, William J. Long, you will find him dividing the creative life of the creative period of Shakespeare into four categories of productivity, of creativity, right? Friends, this was first published in a quarto edition, and that was in 1603. During the life of Shakespeare itself, this particular play was published. What I'm trying to do here, जिस पे मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा, वो ये कि when we talk about a Shakespearean tragedy, we basically also we are also required to refer to the sources. हालांकि ये काम कॉमेडीज में भी किया जाता है कि आखिर वो कौन सी कॉमेडी है और वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडी के एलिमेंट्स ग्रहण किए। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि शेक्सपियर वाज इम्बाइबिंग शेक्सपियर वाज इम्बाइबिंग अ लॉट ऑफ कॉमेडी एलिमेंट्स from the comedies of Plautus and Terence, the two great writers of comedy of the Roman literature. Shakespeare was imbibing a lot with reference to his comedy. He was imbibing a lot from Sir John Lilly and his very famous romance Effuse. So much so that सर जॉन लिली का एक बहुत मशहूर रोमांस है रोजालिंड, ROSALYNDE, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दिस पर्टिकुलर रोमांस बाय सर जॉन लिली बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर शेक्सपियर क्रिएटिंग हिज कैरेक्टर ऑफ रोजालिंड इन एज यू लाइक इट,
जो कि शायद आई डोंट नो कि आपको ये पता है कि नहीं, who has been regarded as the most beautiful heroine of Shakespeare. Not only that, my dear friend, in world theater, she has been regarded as one of the most physically beautifully crafted character, right? As Portia has been regarded as the wisest one by Shakespeare, Rosalind is the prettiest one by Shakespeare, right? Anyways, मैं भटक रहा हूं, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि while reading a Shakespearean play, it is very important to note and it is very important to try to know, और आपको इस पे काम करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, अगर आप शेक्सपियर के ड्रामों को, दोनों ड्रामों को टेकअप कर रहे हैं, कि इन दोनों ड्रामों का सोर्स कहां से है, फ्रॉम वेयर ही फाइंड्स हिज मटेरियल. As far as this particular play is concerned, I mean, as far as Macbeth is concerned, sorry, as far as Hamlet is concerned, Shakespeare draws his material, Shakespeare draws his inspiration, Shakespeare draws his influence from several sources, as I have written in the chat box, right? इस वक्त मैं रेफर करना चाहूंगा एक किताब को, बल्कि तीन सोर्सेज मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए दे रहा हूं. वन इज सैक्सो ग्रामेटिकस. लेट मी चेक. या, इट्स करेक्ट. सैक्सो ग्रामेटिकस. ठीक है. He was a writer. The book name is Gesta Damorum or Gesta Damorum. This is the book name. It's a 12th century text. It's a 12th century text, right? And Shakespeare draws his material for Hamlet from book third and book four. Sorry, extremely sorry. Book 3 and book 4 of that book. So this is one source. The other source is here. Stories tragiques. Let me check. Yeah, it's correct. Stories tragiques. Right. It was a book, 1570, and he took his ideas from volume 5 of the book. Right. And this particular book was a translation from French. It was a translation from French. And to your surprise, the third source is very interesting. I have given you the name of a very great, important dramatist of the Elizabethan age, whom I personally like very much, Thomas Kidd. And I have referred to Thomas Kidd's play, The Spanish Tragedy. I told you that it was based on Senecan tragedy concept of revenge play, and it has been regarded as among the early strong revenge play in the Elizabethan times, before the coming of Shakespeare on the Elizabethan stage. In this particular book, there is a character. I'm sure I'm writing the name correct, but उसके बावजूद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार इसका नाम का स्पेलिंग जरूर नेट वगैरह से चेक कर लीजिएगा. So this particular character has been used by Thomas Kidd in a Spanish tragedy, who becomes mad in the play because of the death of his son, because of the killing of his son. And he was an old man of 80 years of age in that particular play, in the Spanish tragedy. जबरदस्त है. मैं जिस वक्त अभी आपसे बात कर रहा हूं, जब हमारे टीचरों ने ये किताब पढ़ाई थी हम लोगों को, it was there in our course. Is right now when I am talking to you, I am having that very famous style of saying कि मेरे जो रोवे हैं वो खड़े हो रहे हैं, जिसको आप अंग्रेजी में goosebumps कहते हैं. So an 80-year grand man, an 80-year-old man taking the revenge of the murder and the killing of his son. And it is said
two very juxtaposed theories given about his madness. Some critics say that he was really mad, and some critics say no, 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 no. Had he been mad, he would not have. It would not have been possible to avenge his son the way he avenges in the play. जिस तरीके से इसने बदला लिया है. So some critics say, nah, it was a kind of a fiend madness. It was a kind of a fiend madness. Yani he was not mad, rather he basically fiend madness. उसने सिर्फ बनाया, ऐसा जाहिर किया, एक बनावटीपन अख्तियार किया मैडनेस का in order to take revenge of his son. Why I am referring to this? Because those among you, I don't know, I am not very hopeful because I never hope these kind of things, right? But if ghalati say, if some of you have the courage to study the original text of the play of Hamlet, you will find an undertone of this man Hieronymo in the character of Hamlet, and that is why I said yesterday or the day before yesterday that Kid was a kind of a precursor to Shakespeare. बहरहाल जो इस स्पेनिश ट्रेजेडी से ज्यादा किड के बारे में ये कहा जाता है कि किड ने एक ड्रामा लिखा था that was written in an early 16th century format, and that play was spelled like this. I'm writing it in the chat box. This was by Kid, and so Hamlet was so Shakespeare was inspired by this particular play by Thomas Kyd while writing his play Hamlet. This is, I mean, whether this particular play Ur Hamlet by Thomas Kyd or the character of Hieronymo in the Spanish tragedy by Thomas Kyd, certainly it is quite for sure that Shakespeare was knowingly or unknowingly, deliberately or not deliberately using or referring to or being inspired from Thomas Kyd, inspired by, sorry, Thomas Kyd, right? तो मेरे ख्याल से मुझे अपनी बात आज यहीं खत्म करनी चाहिए. I'll be talking about Hamlet tomorrow. Most of the things of Hamlet tomorrow. Let me check the time. Do we have some time? No. So now I'm here. I'm here. You can ask your questions if there is any. If you don't want to ask any question, or if you are in any kind of hurry, I have no objections. You may leave. Ask your questions in the chat box. For this, you need to study Shakespearean comedy. You also need to study the concept of classical comedy. It is only then you can compare and you can find out that how a Shakespearean comedy is different from an a classical comedy. And we need at least 1 hour to have a discussion on the concepts and features of Shakespearean comedy. If you can come to my college, I can tell you. Without any fees, of course. About play within a play, can we say that Marlowe uses this technique? Yes, 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 very much. Yes, बिल्कुल. हैमलेट में भी यूज किया है. अभी हम लोग बात करेंगे. हमने इसीलिए बहुत डिस्कशन नहीं किया क्योंकि हैमलेट जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना कल, तो हम लोग ये प्ले विद इन अ प्ले वाले एस्पेक्ट पे बात करेंगे थोड़ी सी, एटलीस्ट फॉर 4-5 मिनट्स, राइट ना. सो यू आर राइट वेरी मच विद्या that this technique of play within a play is used by Christopher Marlowe. It is used by, बल्कि मैं बताऊं आपको, वो जो स्पेनिश ट्रेजेडी को मैं रेफर कर रहा था उसमें भी इस एस्पेक्ट को किड ने भी लिया है, टेकअप किया है. मैंने इसीलिए कहा ना कि इट्स अ डिवाइस
ड्रामेटिक डिवाइस जो कि ड्रामेटिस्ट यानी जो नाटककार हैं वो यूज करते हैं इस डिवाइस को अपने ड्रामों में, ठीक है ना। तो यू आर वेरी करेक्ट द व्हेन मेफिस्टोफेलिस made a presentation of the seven deadly sins in the form of human characters in front of Dr. Faustus in the play. And if Dr. Faustus is happening, say for example in Jamshedpur, सो एक तो जमशेदपुर के किसी थिएटर में डॉक्टर फॉस्टस का मंचन हो रहा है, और डॉक्टर फॉस्टस के भीतर यानी उस नाटक के भीतर वो सेवन डेडली सिंस का मेफिस्टोफेलिस के द्वारा मंचन किया जा रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रामेटिक डिवाइस ऑफ प्ले विद इन अ प्ले दैट इज यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। यू आर वेरी करेक्ट। Music is a very small element. It's not a very big thing in Shakespeare. But yes, you can refer to music also as an element in Shakespearean comedies. You are right. Janvi Trika, I'm extremely sorry. I'm not a language teacher. I cannot tell you the meaning of nunnery. You can get the meaning from a dictionary. You have a better source than me. What is AMND, Vidya Shankar? I don't know. I'm very poor in these kind of things. So if there is a question on the use of play within a play in as a Midsummer Night Dream, can we compare that with the use of yeah, of course. लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा विद्या ऐसा करने के लिए। Why I will not suggest? Because these two are very different plays. Yes, if you are working on, give me some time, मुझे थोड़ा चार्जर ऑन करना है, एक सेकंड मुझे दीजिए सिर्फ। यस विद्या, आई एम बैक। तो मैं ये कह रहा था विद्या कि मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मिड समर नाइट्स ड्रीम के प्ले विद इन अ प्ले वाले को आप कंपेयर करें हैमलेट और फॉस्टस वाले से, बिकॉज दीज टू आर very different plays in nature. Yes, when you are writing about Faustus, you can refer to Hamlet play within a play. When you're writing about Hamlet, you can very surely should refer to Faustus का जो play within a play का concept है. Yes, you can do that. All right. Any other question, please? Those who wish to leave may leave. I have no objections. If there is any question, please go ahead. अगर वो मुझे बहुत कम टाइम में जवाब देने लायक लगेगा तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। आप बिल्कुल निसंकोच होकर के पूछें। हाँ, अगर मुझे ये लगेगा कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारा समय चाहिए तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। All right, so nobody is asking. Good night. Thank you so much. And thanks. Yeah, there is a question. Appearance versus reality. अरे भाई, इतना तो appearance versus reality है। Lot of वो जो पूरा जो लव ट्रायंगल है वो appearance versus reality ही है। वो जो ओबेरॉन और टाइटेनिया को के जो आंख में जो डाला उसने फ्लावर जूस, वो उठी तो वो जो बॉटम था जिसका एक एस हेड लगा दिया था, ये सब है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। लॉट ऑफ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। हमारे कॉलेज से आपको क्या मतलब?
वैसे आई एम हियर एट जमशेदपुर, ललिता. Thank you so much. Any other question, please feel free to put it in the chat box, or else मैं फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करूं for a very patient listening. And Okay, as I sir. said in our first class also, as I said in our first class also, these online classes are becoming very tiring and troublesome, but you people are turning out to be good listeners and good participants, very calm, quiet, very good. So I'm extremely thankful to you all. अलका अभी बच्चा अभी हमने कहा आपसे कि हैमलेट जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो सिर्फ दो चार लाइनें ही तो बात की हैं, तो कल हम लोग थोड़ा हैमलेट पे बात करेंगे. You mentioned the love triangle in Midsummer Night Dream is sinister. I read somewhere that they have undertones of Romeo and Juliet. Can you make a comparison? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा जो मैंने ऊपर शायद आप ही ने को तो वो मना किया था जब आप पूछ रहे थे. मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि रोमियो एंड जूलियट के साथ कंपैरिजन करना मैं इसलिए ठीक नहीं समझूंगा क्योंकि रोमियो एंड जूलियट इज अ ट्रेजेडी. ठीक है, नंबर वन. दूसरा ये कि वो एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है. ठीक है, वो एक रोमांटिक ट्रेजेडी भी है, मैं मानता हूं. बट मोर देन दैट, रोमियो एंड Juliet is a tragedy based on history. It's a chronicle play also. Apart from it's a tragedy and it is a romantic tragedy, it's a chronicle play also. अब आप लव ट्रायंगल के बिना पे खाली बात करोगे ना, तो लव ट्रायंगल तो एज यू लाइक इट में भी मिल जाएगा, और लव ट्रायंगल तो 12 नाइट में भी है मेरे भाई. एज यू लाइक इट में तो बढ़िया सा है बहुत. तो आप रेफर कर सकते हो, आप रेफर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कंपैरिजन करना इसलिए बेहतर नहीं होगा क्योंकि दोनों ड्रामों का टोन और अप्रोच में बहुत फर्क है. सर, आई वाज देयर इन द कॉलेज बट मिस द मीटिंग. जी, मैं संडे को, असल में बाकी दिनों में मैं इग्नू में शाम 6 बजे तक रहता हूँ, इसलिए संडे को मैं थोड़ी सी बेईमानी करता हूँ. संडे को हमारे जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वसुधारा मैम और कौसर मैम, वो लोग अर्ली आती हैं, और मुझे उन लोगों ने इजाजत दे रखी है कि तुम जो हो वो 12 बजे के बाद आया करो. तो मैं 12 बजे के बाद जाता हूँ, बिकॉज आई हैव टू स्टे इन द कॉलेज टिल इवनिंग. I hope if you know Karim City College, we have a lot of Sunday activity classes in music, drama, and all for our college, and I have to take care of that also. So I remain there till around 6 o'clock. आज आपकी क्लास की वजह से मैं 6:15 पे वापस आ गया घर. अदरवाइज मैं संडे को 7-8 बजे आ वापस आता हूँ, इसलिए मैं संडे को लेट से जाता हूँ. तो मुझसे अगर मिलना हो रूपाली, मतलब आई मीन स्पेसिफिकली ऑन संडे, तो यू आर मोस्ट वेलकम आफ्टर 12 o'clock, राइट? और अगर बाकी जो नॉर्मल इग्नू डेज हैं उसमें मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से 4 से 6 जो इग्नू का समय है एट अवर स्टडी सेंटर, सो आई रिमेन देयर विथ ऑल ऑनेस्टी. अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, आप बिल्कुल मिलिए. देखिए, मैंने कहा कि आई एम नॉट अ बिजनेस मैन, आई एम ऑल्सो नॉट अ प्रोफेशनल टीचर. ठीक है, मतलब इस हद तक तो प्रोफेशनल हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा कॉलेज मुझे तनख्वाह देता है, और इग्नू के लिए काम करता हूँ तो इग्नू मुझे रेम्यूनरेशन देता है. बट in anything else, I'm not a professional teacher. I know I do not go for tuitions. I never